Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Pratham Test Prep. My name is Girish Bhatt and today we are here for exam strategy session for one of the most awaited exam of IP-CET, IP-Ba-Jmc, right? Many of you are waiting for this exam from since very long time, right? So आज इसका detailed exam analysis हम लोग करने वाले हैं. So for English section we have Praveen Khanna sir with us, and for general awareness and media aptitude we have Hema Chaudhary ma'am with us, and I'll take care of reasoning part. Right. So we'll talk about every section in detail कि क्या paper का pattern होगा, right? क्या expected topics हो सकते हैं in paper, and क्या difficulty होने वाली है. We'll talk about everything in detail. So everyone be with us for next 20-25 minutes. So आपको एक clarity हो जाएगी अपने paper के बारे में कि paper में क्या pattern होने वाला है, right? So this is the pattern of the paper. I hope screen is visible to everyone. So here we have total 100 questions, or we can say 25% weightage of 4 sections, right? So in this paper, we have total 4 sections: English language and comprehensive, general awareness, reasoning, media aptitude. So weightage of each section is equal 25% each, right? So for correct, and what about time? Here we have sufficient time for the paper, right? For 100 questions, we have 150 minutes, right? 2 hours and 30 minutes, right? 2.5 hours. So this paper is offline paper, right? And marking scheme is +4 for correct answer and -1 for incorrect answer, right? And also we'll talk about in detail for every section. And now बहुत बड़ा confusion आपके mind में ये है कि because syllabus में maths mentioned नहीं है, right? तो maths के बारे में क्या maths से question होंगे यहाँ पर, right? ये एक बड़ा question आपके mind में होगा कि maths से भी question आ सकता है क्या? तो वो भी आपका भी confusion clear हो जाएगा, right? कि अगर maths syllabus में नहीं है तो क्या possible है maths से question आ सकता है? Right? What is the syllabus of logical reasoning section, and what is the syllabus of English reasoning, and very important कि media aptitude में क्या questions पूछे जा सकते हैं? What are the important topics for media aptitude? Right. So I'll start with the very first section, logical reasoning. Right. So now we'll talk about कि क्या QA आ सकता है इस section में? Right. बहुत से बच्चों के mind में ये question होगा, तो मैं आपको ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूं. सी 2021 के पेपर में देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स. ऑल 25 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस थे सभी लॉजिकल रीजनिंग से, राइट? वो प्योरली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे. बट लास्ट ईयर 2022 देयर वाज फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक मैथ्स, राइट? कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिक मैथ्स से. सो मेक श्योर आप ये इस ईयर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में बेसिक मैथ्स से पूछे जा सकते हैं, राइट? सो मेक श्योर बेसिक मैथ्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स, लाइक इफ आई एम सेइंग बेसिक मैथ्स ना, you'll find very easy questions, right? Easy questions means you'll find questions from topics like simplifications, right? Just use of BODMAS. I hope you all are aware with the term BODMAS, right? Second, we have profit, loss, and discount. Very easy questions. आपको ये topic terms profit, loss, discount देख के डरना नहीं है. You'll find very basic questions of profit, loss, and discount. अगर आपको basic understanding है what is profit, what is loss, what is discount, तो you can solve that question जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, right? Also, you can expect question from simple percentages, right? Percentage, like time and work, very basic question from time and work. Easy question from time, speed, and distance. Like average is one topic, just say you can expect question. Ratio, these are all very easy topics, right? So basically, these are the topics, and also you can expect one question from permutation and combinations, right? Very easy question, very basic question, permutation and
कॉम्बिनेशन। सो मैथ्स में आपको केवल और केवल ये टॉपिक्स का बेसिक, इसके केवल इजी क्वेश्चंस ट्राई करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर सकते हो दीज टॉपिक्स, एंड द लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी इजी, नॉट इवन मॉडरेट, राइट? इजी क्वेश्चंस। लाइक 2022 में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस थे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 में भी आ सकते हैं, राइट? पॉसिबिलिटी है, करेक्ट? सो नाउ विल टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर बीजेएमसी, राइट? सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी कॉमन फॉर बीजेएमसी पेपर इज analogy. So you can expect 2-3 questions from this particular topic, analogy, right? This is not English wali analogy, this is reasoning wali analogy. You'll find simple questions, right? Like chair is related to furniture, then book is related to, pages are related to what? So it's a simple analogy questions you can expect. Second important topic is sequence and series. Right, again, this is very important topic, sequence and series. Next important topic is coding and decoding. This is important topic, and this is the common topic for all the exams, right? Coding and decoding. Next one is family tree. You can expect 1 or 2 questions from this particular topic, family tree, blood relation, right? Then we have direction sense, directions. So this topic say you can expect some questions in your paper, right? And next topic agar hum baat kare, that is arrangement. So simple arrangement say you can expect 2-3 questions in this paper, right? Very basic questions, right? And next we have visual reasoning, and also you can expect question from syllogism. I hope now everyone is comfortable with the topic syllogism, right? Very interesting topic and very common topic for your papers, right? And the next important topic we have from reasoning part is inequalities. You can expect 1 question from this particular topic, and then critical reasoning. So basically these are the topics जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? सो मेक श्योर रीजनिंग के ये टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, राइट? क्यूए मैंने बता दिया आपको 2021 या 2020 में देयर वाज नो क्वेश्चन, राइट? अगर एक और बात आप ध्यान से समझना, अगर क्यूए से क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट? लाइक 2021 में डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वहां क्यूए नहीं था। एंड 2022 में जब क्यूए बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए थे, तो वहां पर डीआई मिसिंग था, राइट? सो उन दोनों में से एक टॉपिक तो आने वाला है, तो मेक श्योर ये बेसिक, एंड डीआई सॉल्व करने के लिए यू नीड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। सो मेक श्योर आपको ये टॉपिक तो रिवाइज बिल्कुल कर लेना चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. Now we'll talk about the second section, that is English, right? So Praveen sir will help you out with English section, right? Over to you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, so इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, correct? और there are few things that we'll have to understand, and that says that ये वाला पेपर क्यों, again as I'm saying, जैसे आपको गिरीश सर ने भी बताया कि ये पेपर डिफिकल्ट पेपर नहीं होने वाला। एक बात तो ये पक्की है, कारण मैं उसका बताता हूँ, क्योंकि आपने मॉक्स अच्छे से कर रखे हैं, आपने चीज़ें ऑलरेडी कर रखी हैं, so this is not going to be a difficult task for you. But there could be one thing here that you need to understand is ये पेपर ऑफलाइन पेपर है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑनलाइन पेपर। सो ऑफलाइन पेपर का थोड़ा सा वेरिएशंस होते हैं ना। वेरिएशंस होने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑनलाइन पेपर, एक ऑफलाइन पेपर कैसे लिया जाता है, बबल्स कैसे किए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, करेक्ट? अदर पोर्शन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये सारे के सारे आप देखेंगे दैट ऑल ऑफ दीज आर equal marks, equal questions that you get. 25 questions here. You got 25 with general awareness, you got reasoning, and you also get the media aptitude.
अच्छा, मीडिया एप्टीट्यूड के जहाँ तक सवाल है, मीडिया एप्टीट्यूड में आपके पास बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे अभी हेमा मैम आके आपको इसके बारे में बताएंगी, एंड शी वुड डेफिनेटली बी हेल्पिंग आउट विद कि कैसे इसको करना है। बट ऑलरेडी आपके पास जो बुकलेट है वो सफिशिएंट है इस पेपर की मीडिया एप्टीट्यूड को समझने के लिए, करेक्ट? दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस का वेयर मैम वुड डेफिनेटली बी हेल्पिंग आउट। तो इस समय मैं पहले आपको बता दूं एक डिटेल्ड सिलेबस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा. What exactly is the syllabus and how we supposed to go for it? I'll be posting the same syllabus to your Telegram group as well, तो वहां से भी आप इसको पिक कर सकते हैं. सो इसका जहाँ तक डिटेल सिलेबस का सवाल है, पैराजम्बल्स, अगर मैं पैराजम्बल्स की बात करता हूँ तो पैराजम्बल्स यू वुड हैव 3 क्वेश्चंस अराउंड, यू हैव 3 क्वेश्चंस अराउंड फॉर पैराजम्बल्स. और पैराजम्बल्स में प्राइमरली पैराजम्बल्स ना होकर सेंटेंस जम्बल ही होता है. जैसे हमारे जिपमैट में आया था, एक जिपमैट का वैरायटी का हो सकता है और 2 क्वेश्चंस आपके पैराजम्बल्स की वैरायटी के हो सकते हैं. और ये इजी कैटेगरी में आएंगे, ये मॉडरेट भी नहीं आएंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनका फेवरेट है. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी यू गेट सम 3 to 5 क्वेश्चंस. या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगेन बेसिक रेफरेंस का वो पूछते हैं. जनरली इसके अंदर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा वो रूट वर्ड्स नहीं होंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. जनरली हम बिलीव करते हैं कि मान लीजिए क्रेसी वाला वर्ड आ जाएगा तो प्लूटोक्रेसी आ जाएगा या जेरेंटोक्रेसी आ जाएगा, राइट, एरिस्टोक्रेसी आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा. जनरली वो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देते हैं वो एडजेक्टिव बेस देते हैं, राइट. से फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन द वन हु ईट्स अ लॉट, तो वहां पे वी कॉल द पर्सन द वन हु ईट्स अ लॉट. 4 वर्ड गिवन होगा, उसमें से एक वर्ड ग्लटन आपको निकालना होगा. So GLUTT1 glutton. Once you find out that, that should be the answer. So instead of one word substitution, instead of those root words, if you're going to study the words which are concrete words, adjectives being given or nouns being given to that person, that should be a better idea. Correct. Similarly, correct usage of verbs. Now, correct usage of verbs का मतलब हो गया कि आपका tenses का हो सकता है, इसमें subject verb agreement हो सकता है, आपका रेफरेंस टू वर्ब्स इन इटसेल्फ ऐसे वो हो सकता है. प्राइमरली हमने देखा था कि कुछ एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो लोग ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के रेफरेंस में बात कर रहे थे. प्राइमरली वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही था, जहां पे वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट, दैट्स व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट. Then we refer to as something called idioms and phrases. So you can definitely look into these idioms and phrases as well. अच्छा, इसके idioms and phrases में again let me tell you that this is going to be tier 1 reference. This is not going to be tier 2. ये tier 1 के होते हैं और इसके 2 questions की आप उम्मीद कर सकते हैं. Antonyms and synonyms के अंदर again you would have some 3 to 5 questions. You would have 3 to 5 questions to go with it. Now when we are saying idioms, तो ये जो proverbs है ना, तो proverbs और sayings वगैरह वो सारी idioms के अंदर आती है. But हाँ, you can definitely have the prepositions here. Now when I say prepositions, ध्यान रखिएगा, preposition के अंदर वो direct preposition भी हो सकता है, मगर उसके अलावा you can also get something called a phrasal verbs as well. So phrasal verbs would refer to as जहाँ पे आपके पास एक adjective होगा, you do have that combination of a phrasal verbs, right? वो phrasal verb का combination इसके अंदर हो सकता है. बट एक्चुअली आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहिएगा, सिंपल प्रेपोजिशन के लिए भी एंड विद फ्रेजल वर्ब्स एज वेल, जहाँ पे वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है, एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन भी होता है, वर्ब एंड प्रेपोजिशन आल्सो बीन गिवन. सो वो वाला जो रेफरेंस है वो प्रेपोजिशंस भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर. देन वी हैव पार्ट ऑफ स्पीच. नाउ पार्ट ऑफ स्पीच में सभी कुछ आ जाती है, ऐसा तो कोई चीज है नहीं कि पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या चीज आ सकती है, बट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज अ ग्रामर हियर. एंड एनोलॉजी वुड अगेन रेफर टू एज अ वोकैबुलरी. तो अब सवाल ये आता है कि सर आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस किस चीज पे सबसे ज्यादा मुझे रेफरेंस देना होगा. तो सबसे पहली चीज आपकी आएगी दैट वुड रेफर टू एज वोकैबुलरी. सो वोकैबुलरी के आपके पास भर भर के क्वेश्चंस होंगे और ये बहुत जल्दी हो जाएंगे. नंबर 2 वुड बी योर ग्रामर वन, जिसके अंदर आपका ऑन अ लोअर साइड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड हो सकता है थोड़े सेंटेंस बने हों, बट अगेन यू वुड बी गेटिंग वन. एंड द थर्ड वन would refer to as your parajumbles here. Generally, we have not seen reading comprehension as a part of this. Generally, we have not seen reading comprehension as a part of it. But again, अगर parajumbles है तो reading comprehension का भी कुछ part serve कर सकता है. So what we are saying here is कि reading comprehension भी आ सकता है, मगर उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं आएगी. नहीं आया पिछली बार इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं आ सकता. जैसे गिरीश ने कहा था कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पिछली बार नहीं आया है तो इस बार नहीं आएगा, ये जरूरी नहीं है, इस बार आ सकता है. देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दैट केस एज वेल, बट अभी तक रीडिंग कॉम्बिनेशंस में नहीं आता है. इसको करना सबसे आसान होता है. कारण ये कि चीजें वोकैबुलरी या तो आती है या तो नहीं आती. ऐसा नहीं कि बहुत सोचने के बाद कोई चीज याद आएगी, जैसे जनरल अवेयरनेस के साथ होता है, या तो मुझे पता है या तो नहीं पता.
आउट ऑफ द चॉइसेस में से मैं देखता हूँ, मुझको अगर कोई आंसर ठीक लगता है मैं देता हूँ, नहीं लगता तो मैं सोच नहीं सकता कि रेलवे मिनिस्टर कौन हो सकता है और कैसे होगा, कैसे पता लगाऊं, नहीं लगाया जा सकता. सिमिलरली विद वोकैबुलरी है, you will not be getting the root words, but what you will be getting the concrete words here, correct? So that can also be done there. Great, sir. I would request you to please help Hima ma'am to be the part of this, right? Okay. So let me go ahead from here. Another point that we need to understand with this verbal section primarily, अगर हम बात कर रहे हैं इस verbal section की, एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि verbal section जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफी आसान हो सकता है अगर आप करने की कोशिश करें इसमें. Out of 25 questions, we had approximately 22 के करीब questions ऐसे हैं जो 100% एक्यूरेसी के साथ हो सकते हैं, करेक्ट. और उसके बाद जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है 50%, 60%, 70% एक्यूरेसी के साथ आप करें. तो ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें मुझको समझ में नहीं आता कि आप छोड़ के आए. मेरा मानना ये है कि इसमें आप करें, सारे करें, कोई 3-4 गलत होंगे वो एक अलग बात होगी, बट मेरा मानना ये है क्योंकि स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी उन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया था कि जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस किया था. देखिए, अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन वास्तव में नहीं पता है, सर इसका मैं बिल्कुल भी गेस कर ही नहीं सकता, मुझे आबरा कडाबरा करना है या एबीसीडी करना है, तो देन इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. बट माय रिकमेंडेशन हियर वुड बी कि आप इसको कर सकते हैं, अटेम्प्ट करिए, दैट वुड बी अ कंफर्टेबल आइडिया. अनदर वन वुड बी कि सर इसकी कट ऑफ वगैरह क्या रहती है. पर्सनली मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई कट ऑफ का स्ट्रक्चर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्योर एक रैंकिंग सिस्टम के थ्रू होता है, राइट. सो ये रैंकिंग सिस्टम के थ्रू होता है, तो रैंकिंग के अंदर कट ऑफ का निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है बिकॉज वो इस चीज को रिलीज नहीं करते हैं, करेक्ट. बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप इसको कीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करें. So that can also be done here. So that is what about the English language and comprehension. So reading comprehension अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम नहीं आया था, मगर इस टाइम अगर आएगा भी, अगर आ भी जाता है कॉम्प्रीहेंशन जैसे कि बात बता रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप टीयर 1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने की कोशिश करें, जहाँ पे आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे. फॉर श्योर यू वुड हैव अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हियर, और अगर कोई एक आधा क्वेश्चन हुआ जनरली तो वो आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है. अदरवाइज इसी के अंदर यू वुड हैव वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. सो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड एज बीन गिवन इन द पैसेज. सो अगर पैसेज के अंदर कोई आपको वर्ड गिवन है, उस वर्ड को कैसे रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, करेक्ट. सो उसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा. नंबर 2 दे में ऑल्सो आस्क अबाउट हियर इज कि उसका सिनोनिम, एंटोनिम. सो वोकैबुलरी में मैं आपको बता देता हूँ, सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है और रिप्लेसमेंट होता है. कि मतलब इसकी जगह अगर मान लीजिए मुझे कोई और वर्ड डालना है या कोई और फ्रेज डालना है या मुझे उसका कोई और रेफरेंस देना है, तो वो रेफरेंस कैसा रहेगा, दैट शुड बी टेकिंग केयर एज अ वोकैबुलरी पार्ट हियर. आई होप वी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. ये चेंजेस के अंदर हो सकता है. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, फ्रेजल वर्ब्स, अगेन बहुत सारे तरीके के फ्रेजल वर्ब्स आपने किए होंगे आपके नॉलेज प्राइमर के अंदर भी. अगर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से मुझे रिवीजन करना चाहिए, माय रिकमेंडेशन वो भी आप एक बार नॉलेज प्राइमर में चले जाइए, वहाँ पे जो जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आपको प्रोवाइडेड हैं, दैट बी अ गुड स्टार्ट फॉर यू फॉर दिस पेपर. तो वो एक बार फ्रेजल वर्ब्स आप देख लीजिएगा. अनदर पोर्शन हियर इज सर, क्या फॉरेन रूट वर्ड इसके अंदर आते हैं. इसके अंदर फॉरेन रूट वर्ड जनरली नहीं देखे गए हैं, जितने आपको पता है आई थिंक दैट वुड सफाइस फॉर यू, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आपको इसके लिए फॉरेन रूट वर्ड्स के लिए जाना पड़ेगा. वी हैव नॉट सीन फॉरेन रूट वर्ड्स हियर. हाँ, जैसे आपने जिपमैट के अंदर कुछ एक क्वेश्चंस देखे थे, फॉर एग्जांपल आपने स्पेलिंग के कई बार देख लिए थे, या फिर आपने देखा था कि ग्रामर पार्ट के अंदर दे वर प्राइमरली टॉकिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ अ फ्रेज, राइट. सो रिप्लेसमेंट ऑफ अ फ्रेज आपका ग्रामर के अंदर हो सकता है, दैट कैन बी टेकन. अदरवाइज जो चीज इसके अंदर फिक्स्ड है, जैसे कि एनालॉजी है, एनालॉजी आएगी, सिनोनिम एंटोनिम्स आपके आ सकते हैं, इडियम्स आते हैं, idioms and phrases कह लीजिए या phrasal verbs बोल दीजिए, either way that can come down there. One word substitution में मैं आपको बता ही चुका हूँ. In a one word substitution आपको क्या चीज करनी है, one word substitution के अंदर instead of those root words try to work on the words which are the concrete adjectives or the nouns there. ठीक है, तो इस चीज को करिएगा. This is what that you will have to understand as the part of this particular reference here. Right. So I hope that was part you would have got a picture of, right? So Krisha, I hope your ma'am is in here, and we would definitely be getting a help from her.
राइट? सो अच्छा ग्रेस सर, मुझे एक और चीज बताइएगा, इस पेपर की डिफिकल्टी लेवल आपको कैसा लगता है जनरली, इफ वी टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द रीजनिंग पार्ट एंड विद द क्वांट्स पार्ट, कितना डिफिकल्ट लेवल कितना रहेगा विद रिस्पेक्ट टू जिपमैट, जैसे हमने जिपमैट में किया था? सो अगर अगर प्रीवियस 2-3 ईयर की बात करें तो पेपर का लेवल इवन जिपमैट के लेवल से भी थोड़ा कम सोच सकते हैं। पेपर बहुत इजी होता है क्योंकि जिस लेवल पे इन लोगों ने प्रिपरेशन की है, जिस लेवल के क्वेश्चंस ये लोग हमारी शीट्स में अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे थे, तो उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि इनको पेपर बहुत इजी लगने वाला है। अगर इन्होंने सारे हैंडआउट्स कंप्लीट किए, क्लास शीट्स कंप्लीट की हैं स्टूडेंट्स ने, तो आई थिंक इनको ये सारी पेपर जो भी बीजीएमसी में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं। ओके, वेरी गुड फॉर दैट एंड गुड टू हियर दैट जीतू कि आपका जेवस बहुत अच्छा गया था एंड यू वर मच वरीड अबाउट दैट दो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूंगा, जैसे हम कह रहे हैं ना, जैसे अभी सर ने कहा कि हमारा लेवल अप होता है। देखो मान लीजिए अगर 10 मॉक है या 5 मॉक है, मान लीजिए इफ देयर 5 मॉक्स, उसमें से 2 मॉक या 3 मॉक ऊपर होंगे और 2 मॉक उस लेवल के भी होते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार हम मॉक ऊपर ही देंगे और उस लेवल का कुछ होगा ही नहीं। मतलब ये है कि इस लेवल जो जनरली आता है, करेक्ट, और जो ऊपर का होता है, उन दोनों के बीच में जो भी चीज आएगी वो चीज आपके लिए काम कर जाएगी, करेक्ट। उस चीज को देखने वाली बात होती है। सो वो चीज एक देखने वाली बात होती है। सो दोनों ही चीज आपको बैलेंस हो जाएगा, देयर यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, राइट? थैंक यू गिरीश सर। चलिए हिमा मैम, इफ यू कैन हेल्प अस आउट with the reference of this general knowledge as well as the media awareness. Hima ma'am, all yours. Yes, sir. Thank you so much, sir. First of all, a very good evening, everyone. Right. So, if we talk about IPCET BJMC exam, right, we can say that when we talk about IP University, any exam, whether it's BBA, BCA, right, BJMC, I will say that if we compare the difficulty level of this paper with any other exam, like, if we talk about GMAT, if we talk about IIM, Symbiosis, Xavier's, Christ, या आपका CUET का general test, CUET का general test can be at this level, but when we talk about all other exams, IP के जो exams होते हैं, they are on the easier side if we talk about general awareness part, right? But yes, there can be some, we can say that unpredicted questions, especially if we talk about, the media awareness part. So पहले मैं आपका media aptitude part cover करूंगी, then I'll talk about the general awareness part. So if we talk about first the type of questions that can be asked in the media awareness section, आपको पहले तो ये चीज समझनी है that when we talk about media awareness can include the facts also, and media awareness can include the current affairs part also, which is directly or indirectly related to media, right? मीडिया की जब हम बात करते हैं, it can include your television part, it can include radio, it can include newspaper, right? And it can include the internet media, or you can say modern age media, right? Now if we talk about that, हमें किस चीज पे फोकस करना है, क्या कवर करना है, कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या पढ़ना है, राइट? अगर हम उसकी बात करें तो you need to be aware that when we talk about media aptitude part, right, सबसे पहले तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मेन टॉपिक्स की, राइट, टॉपिक्स जो इसमें कवर हो सकते हैं, इट कैन बी योर टेलीविजन, विच कैन इंक्लूड योर स्टैटिक प्लस करंट, सो स्टैटिक फैक्ट्स पे भी क्वेश्चन हो सकता है एंड मीडिया रिलेटेड करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन हो सकता है। टेलीविजन हो गया, यू कैन से रेडियो, राइट, यू कैन टॉक अबाउट प्रिंट मीडिया में बेसिकली हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड एवरीथिंग की बात करेंगे, not just newspaper, I would rather write it print media and not newspaper is a part of print media, so we can say, let's say, if we talk about print media and if we talk about मॉडर्न मीडिया, या जिसे आप टेक मीडिया भी बोलते हो, जिसमें आपका इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ये सारी चीजें आ जाती है। नाउ अगर हम बात करें एक और पार्ट की, तो इट कैन बी मिसलेनियस, राइट? मिसलेनियस में मेनली दे कैन फोकस ऑन दी टर्मिनोलॉजी, दे कैन फोकस ऑन दी न्यू एरा टेक्नोलॉजी। तो आपका जो न्यू एरा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, राइट, इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्न डे media, which includes your social media, which includes your digital media, इस पे से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राइट, तो अगर हम इनकी बात करें, जो स्टैटिक पार्ट है, दिस हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड इन दी इन योर क्लासेस, राइट? अगर हम क्लासेस की बात करें, आपको ऑलरेडी
क्लासेस में हमने कवर किया है विद डिटेल, हमने हैंडआउट्स भी किए हैं, हैंडआउट्स में देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो, राइट। जैसे अगर हम बात करें हैंडआउट में जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, दो ना व्हेन वी टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस, राइट, सो द क्वेश्चंस ऑफ हैंडआउट्स दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। नाउ जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहले तो उन एग्जाम्स की जो उन क्वेश्चंस की, सॉरी, जो आपके इजी पार्ट पे या आपके डायरेक्ट एंड एक्सपेक्टेड पार्ट पे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो मैं जैसे पास्ट ईयर पेपर्स का यहाँ पे रेफरेंस लेते हुए चलूंगी। अगर मैं 2020, 2021, 2022 एग्जाम्स की बात करूं, देयर वर क्वेश्चंस ऑन first silent movie, right? There were questions on father of Indian cinema, right? मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ जो कि आपके रिपीटेडली किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, राइट। First Hindi newspaper of India, first English newspaper of India, first English magazine of India, right? And the questions related to Bengal Gazette, right? Who own this, right? So ये आपके कुछ basic questions हैं, right? या फिर there will be a name of radio channel, right? And you need to tell the name of the owner, right? Then आपके current affairs related, there can be questions related to brand ambassadors, mainly if they promote any tourism, any state's tourism or anything, or any you can say that any digital product or anything, right? They can ask you questions on the media company, that which channel is owned by which media company, which magazine is owned by which company or anything, right? Or they can be asked questions on the mergers and acquisition, where the focus is on the news channels or focuses on the media, you can say companies. And remember one thing, that आपका इंडिया पे तो फोकस होगा ही इंडियन मीडिया के साथ साथ, you need to know about few global companies also, and for that we have covered this global media companies part in the class as well. ये तो आपका वो part है which is predictable, and most of the questions will be from this. But like in the year 2021, राइट, अगर मैं पिछले 4-5 सालों का क्वेश्चन पेपर उठा के देखूं तो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था, दैट वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल इफ वी स्पेशली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट और द सेक्शन कॉल्ड मीडिया एप्टीट्यूड। उसके जो क्वेश्चंस थे दे वर स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल, एंड वो ज्यादातर जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डे सोशल मीडिया है, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी एंड फैक्ट्स पे क्वेश्चन आए थे। जैसे if we talk about few questions, right, there were questions related to hashtag, right? There were questions related to CSR, there were questions related to typography, right? There was question related to TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. There was a question on the term microblogging, right? So if we talk about this, there was a question on the, अब यहाँ पे indirect अगर मैं बात करूँ आपका, somewhere it is related to social media, तो question आ गया था। जैसे Instagram related question were there, owner company, owning company of Instagram and all, right? The tags, and when we talk about hashtag, if we talk about coding, right? इन सारी चीजों पे, इनके टर्मिनोलॉजीज पे दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, राइट। ये आपके अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। पिछले 5-6 सालों के न्यूज, अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं, देयर वाज वन ईयर व्हेन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। 2021 की अगर हम बात करें तो स्पेशली था। इफ वी टॉक अबाउट 2020, if we talk about 2022, there were easy, direct, predictable question with 4 to 5 unpredictable question. So we can say that there will be a combination of static media facts and current affairs related to media, right? अब इसके लिए हमें क्या करना है? If you are a Pratham student, you need to revise the class notes that we did in the media awareness part. आपके बच्चे पीपीटी बेस्ड क्लासेस हुई थी, तो पीपीटी में जितनी भी थ्योरी थी, राइट, जितने भी मैंने आपको नोट्स बनवाए क्लास में, आपने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैंने ग्रुप पे भी काफी, टेलीग्राम ग्रुप जो आपका है उसमें मैंने बहुत सारे नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, आप वहां पे बच्चे ये अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड, यू नीड टू फोकस ऑन दी हैंडआउट क्वेश्चंस। हैंडआउट क्वेश्चंस के अलावा बच्चे, इफ वी टॉक अबाउट योर नॉलेज प्राइमर, राइट, मास कॉम की जो आपकी नॉलेज प्राइमर है, राइट, मास कॉम की जो आपको बुक मिली हुई है, देयर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज देयर। आप में बच्चे उसमें जो हमने क्लास में कवर किया है उससे रिलेटेड बुक में जो एडिशनल थ्योरी दी हुई है वो जरूर कवर करेंगे, एंड बुक का जो आपका क्वेश्चन है बेटा पीछे, वो जरूर आप करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू डू मॉक्स एज वेल। आपको मॉक्स जरूर देना है, क्योंकि मॉक्स के जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स।
तो आपको ये समझने के लिए कि किस तरह का पेपर आएगा, हाउ टू attempt the total number of question in a specified time, how to manage your time while giving your mock or in your actual paper, it is important that you guys give mocks also. Now if we talk about another section, which is general awareness, which can be considered as the make or break section, right? So if we talk about general awareness, which is also known as general knowledge, अगर हम इसकी बात करें तो बच्चे ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, राइट? देयर कैन बी स्टैटिक जीके क्वेश्चन, जो पिछले 2 साल में हमें दिखा है, देयर कैन बी करंट अफेयर्स क्वेश्चन, एंड देयर कैन बी मीडिया रिलेटेड क्वेश्चंस बट इनडायरेक्टली। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे आपके दोनों में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे भी और वो इस सेक्शन में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल if we talk about awards and honors, for example if we talk about films directors, composer of the songs and like that, सेम यहाँ पे भी आपका बच्चे यही आ जाता है, आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स, राइट? जो करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, बट यहाँ पे हम मीडिया रिलेटेड अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर रहे हैं। आपका फिल्म्स इसमें आ सकता है, क्योंकि हम बच्चे यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि हम मीडिया की बात करते हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बुक्स एंड ऑथर्स, तो ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टैटिक जीके में आपके वही सारे टॉपिक आ जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, राइट? एंड आपका मिसलेनियस, जिसमें आपका बच्चे मेन होता है, जैसे फोक डांस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? देयर कैन बी क्वेश्चंस ऑन नेशनल पार्क, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन था, राइट? देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन, अगर हम बात करें बच्चे यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट, जो इंडिया में है, तो आपको किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दे देंगे, ये पूछ सकते हैं कि किस स्टेट में है, राइट? देयर कैन बी क्वेश्चंस ऑन वर्ल्ड्स फर्स्ट, there can be questions on India's first, there can be questions on the festivals of India, कि किस स्टेट का फेमस है। if we talk about art forms पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मंडला आर्ट जो है बच्चे वो किस स्टेट से है, राइट? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में कवर हो सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें, जो आपके कोर स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका भर भर के इनसे क्वेश्चन आएगा। लाइक इफ वी सी द ट्रेंड, जरूरी नहीं है कि आपका हर साल ही स्टैटिक जीके ज्यादा हो। 2019 तक स्टैटिक जीके पे सबसे ज्यादा फोकस था, बट नाउ वी आर सीइंग द शिफ्ट फ्रॉम द स्टैटिक जीके टू मिसलेनियस पार्ट मोर। एंड जब हम मिसलेनियस की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पे आपका आ जाता है स्टैटिक जीके रिलेटेड करंट अफेयर्स, और यू कैन से स्टैटिक जीके रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स से रिलेट करके दे कैन आस्क यू स्टैटिक जीके क्वेश्चन। So yes, focus is on static GK and current affairs also, but पिछले 2-3 सालों में आईपी यूनिवर्सिटी का अपने हर एग्जाम में जो शिफ्ट उसका हुआ है, दैट इज टुवर्ड्स द मिसलेनियस पार्ट, जिसमें वो स्टैटिक जीके रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ज्यादा पूछता है, राइट? करंट अफेयर्स की बात करें तो यू नीड टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ 1 ईयर, एंड अगर इतना नहीं कर सकते एटलीस्ट 8 to 10 मंथ तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए, आपके जो क्लास में करंट अफेयर्स हैंड आउट हुए हैं वो जरूर कीजिए। यू नीड टू डू दी monthly questionnaires which are available on your PSIS account, and if those students who are not a part of Pratham, if they are watching this, what you need to do is you need to cover the current affairs of at least 8 to 10 months to score well in this section, राइट? इसके लिए आप बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडियन अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट योर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, राइट? इसके अलावा स्पोर्ट्स पे भी देयर कैन बी क्वेश्चंस, बैंक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज पे क्वेश्चन आ सकता है, ब्रांड एम्बेसडर्स अगर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं तो उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट, एंड इस पार्ट के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मॉक्स। तो जितने भी मॉक्स अवेलेबल है ऑन योर PSIS अकाउंट आप वो कीजिए। इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रथम, तो आप कहीं पे से भी अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया है तो प्लीज जितना हो सके, this is the time when you need to focus on the revision part and giving mocks. See your mocks result, analyze your performance and focus on your weak part. अभी कुछ नया स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, the time is to revise whatever you have done, trust on your preparation, and practicing on regular basis, on daily basis will help you in your exam. So giving mock is the mantra, doing revision is the mantra, that's all. And if we talk about your media aptitude and general awareness part, attempting the question in both these sections will not take much time.
तो आपको ये अपना इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि आप मिनिमम टाइम में अपना मैक्सिमम टाइम सिक्योर कर लो, और बचे हुए टाइम को यू कैन यूज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। वैसे वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट, मैक्सिमम मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आपका जाएगा। डिफिकल्ट और हायर डिफिकल्ट लेवल पे ये पेपर आपका नहीं आएगा, राइट। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडियल अटेम्प्ट और एनीथिंग, तो वो ऑब्वियसली एवरी ईयर इन जनरल अवेयरनेस एंड मीडिया एप्टीट्यूड दोनों सेक्शन की अगर मैं बात करूं, आइडियल अटेम्प्ट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, राइट। सो आप जब एग्जाम दे के आएंगे, आपको आइडियल अटेम्प्ट हम तब डिस्कस करेंगे जब हम पेपर एनालिसिस की बात कर रहे होंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, राइट। एंड आई होप दैट ये जो सेशंस है ये आपकी हेल्प करते हैं। एक लौता मंत्र बच्चे लास्ट टाइम पे यही होता है, दैट डू योर रिविजन प्रॉपर्ली एंड अटेम्प्ट द मॉक्स एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, so that you should not, you will not be, repeating your mistakes in your actual paper, right? That's all from my side. So all the very best for exam. Kanna sir, I think that was part from my side for general awareness and media aptitude. Giri sir, Kanna sir, I hope I'm audible to everyone. Yes, ma'am, you are. Yeah, yes sir. चलिए, that was a good one. That was a good one, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for being there. And Bajikal sir, I'm sure आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि अब करना क्या है इसके लिए, करेक्ट? तो कल मिलते हैं 8:30 where we would be discussing about our BCom honors strategy, right? So we will be talking about the BCom for IP University. कल देखते हैं कल के पेपर के अंदर क्या क्या वेरिएशंस होनी है, and then I'm sure you would be prepared for that, right? Thank you everyone, and thank you faculty members, and thank you students for being there. Bye bye. Yeah, thank you so much sir. Bye. Bye everyone, all the best.